Welcome to ZT classes. Take our question. So the angle of elevation of the top of a tower from 2 points distant S and T from its foot are complementary. So we have got a tower is there. Now from this tower there are 2 points are there which are at distance of S and T, and from there the angle of elevation is complementary. So let's say those 2 points are Q and P. They are at distance of S and T. From point Q, let's say the angle of elevation is theta degrees. Now from P, the angle of elevation is complementary, that is that angle will be 90 minus theta. We have to prove that the height of tower is square root of S into T. Let's see the solution. So here in this question it's given that AB is a tower and P and Q are the points of observation. Let the angle APB is 90 minus theta and angle AQB is theta. So to prove, we have to prove height of tower, that is AB, is equals to square root of S into T. Let's see the proof. बेटा like all other questions है ना जो हमने पहले भी किए हैं, तो हर क्वेश्चन में कहानी वही है कि आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, उन दोनों को आपको सॉल्व करना है और उन दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेनी है. कौन सी रेशियो लेंगे? 90% क्वेश्चन में आप 10 की रेशियो लगेगी, है ना. अदरवाइज यू कैन वर्कआउट इजली हियर कि आपको जो साइड गिवन है और जो फाइंड करनी है वो रेशियो में इंक्लूड होनी चाहिए. गिवन आपको यहाँ पर क्यू बी है और फाइंड आपको ए बी करना है, तो कौन सी रेशियो लगाएंगे? 10 की रेशियो. ठीक है, तो लेट्स सी हियर. सो वी आर टेकिंग, सबसे पहले हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? ट्राइंगल ए बी क्यू. तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन क्यू बी. तो यहाँ पर हम क्यू बी की वैल्यू डालेंगे एस. सो विल गेट टेन थीटा इज ए बी अपॉन एस. तो सेम वे सेकेंड ट्राइंगल कौन सा होगा बेटा? ए पी बी. सो लेट्स टेक ट्राइंगल ए बी पी. सो अगेन विल टेक 10. So tan 90 minus theta is AB upon PB. That's perpendicular upon base. Tan 90 minus theta is nothing but cot theta and PB is given as T. तो यहाँ पर अब एक इंटरेस्टिंग बात जो आई है कि यहाँ पर tan थीटा है, ये cot थीटा है, और जो हमारा आंसर है टू प्रूव में हमें थीटा को बेसिकली एलिमिनेट करना है. तो हम क्या करें? इन दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा हमें पता है 1 होता है ना. विल गेट आवर आंसर. सो वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस, रिप्लेसिंग tan थीटा इंटू कॉट थीटा बाय 1. सो विल गेट AB square 1 is equals to AB square upon ST. On simplifying you will get AB as square root of ST, and the height of tower is square root of ST, and hence proved, we have proved that height of tower is square root of ST.